Yeah, I'll request ma'am to kindly start and let the other people join in between. Hi, good evening, sir. Hanji, just give me 1 minute, then I'll start. You guys are going to present your case study first, or shall I start the class? Ma'am. Yes, Suman. Ma'am, this is Suman. Ma'am, Yeah. we have done a case study practice in the class itself. So was there anything that I missed at the last slide? Like the last part I did miss because I had internet issue. Did you give homework? The case study practice we did during the class, right? No, there was a case study given in the group which you have to do a presentation on. Okay, ma'am. I'll prepare, ma'am. Not today, but I'll prepare. Sure, no problem. Anchan, are you going to do that presentation? Yes, ma'am. Okay, so please. But it's not good. But I It's understand. okay. Yeah, that's okay. Is my screen visible? Yes. So I'm XYZ company, so I will take Cognizant Technology Solutions. Okay. Yes, ma'am. So the first thing for onboarding is rapid growth. So in the rapid growth, we address the challenge. It is to address the challenge, it is important. So what is the efficient process in onboarding to ensure the new employees to integrate seamlessly into the company culture and workflow. So I the example of my company Cognizant Technology suggests aligning new hires with company values and culture by sharing core values from the beginning. So they can put the core values at the beginning to their new hires so that they can perform well and know their vision and mission of the organization. Another effective onboarding technique is having new hires take on specific exercises. Suppose if a person is hiring in marketing team or in HR team, so with their discipline, they can showcase their skills and we can provide training to them. So it is important to have new employees to understand their roles of other people in the organization. So if some person is working in HR team, so we can train in the another department so that they can know how the work can be done. So it can be help to understand that person, what is the importance of that department and the persons working in that department. Right. Okay. Yes, ma'am. So and second thing is diverse role. To address the challenge of it is important to have onboarding process that caters to these roles. So the Cognizant Technology Solutions have new employees to understand the roles. So they start
e-learning program to suggest the specific exercises within their discipline in which department they are working. So they have organized e-learning, like some companies have a link with Udemy and with many other like Coursera linked with employees can learn with their specific domain and gain knowledge in that and earn that certificate. So which enhance their skills and they can perform well also. Okay. And third thing is remote work. As we know, in the COVID time, we face so many challenges as the HR space face so many challenges. So remote onboarding process is exactly the same as offline hiring process. So we understand the new joinees to understand the training policies and belief is most important of the company at the time of onboarding. So we clear them at the time of induction. So if we take the example of the 2020 pandemic, every industry was compelled to take and stop the face reality. Eventually people realized they could work remotely. Eventually some people realized, which opened up the remote onboarding process also to the HR. Yeah, and the numbers don't lie. We take the pandemic numbers. When the pandemic is over, 49% of HR leaders aims to hire more fully remote workers, because when they understand about how they can perform in the remote work, so how what the employees are expected from them, so they are hiring for the remote workers also. According to the software advisory survey continued in the August 2020. And if we take the toggle survey, 60% of HR managers had to adjust to onboarding staff remotely. In 2000, 16% are fully remote. HRs are 16% fully remote. It is a small amount, but it shows how much remote work has risen, will continue and expand in the future. Now many companies are hiring many people like remote work areas. They give opportunities. They work in, if they are sitting in Himachal or in Gujarat or any other state, so they can join the company, but they can perform their work in the hometown also if they are comfortable. So what there is only 20% strong feeling that the company does, and only 20% employees think the company have doing excellent job of onboarding new employees, according to the survey by Gallup. And the sixth slide is during the onboarding process, new recruits get to meet their co-workers and culture of the firm, as well as learn about the policies and practices that govern their work days. So remote employees onboarding process is identical to a new employee onboarding process at the office. So to help employees, सो मैम जैसे ये होता था कि आप कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते थे तो उनको मेन कंपनीज में जाके लेना पड़ता था, तो इससे क्या होता था कि वहीं पे ही वो एक दूसरे से मिलते थे, आपस में गैदर होते थे, टी ब्रेक वगैरह स्नैक्स एचआर उनको प्रोवाइड, जिससे वो एक दूसरे को अच्छे से जाने। तो चीज थी, फिर एक ऑनलाइन का एक अलग ही चीज थी कि ऑनलाइन तो चलो सबने देखा ही है एक दूसरे को, पर एक आपस में मिलके जो मजा है वो एक अलग ही चीज थी। सो रिमोट वर्क में ये फायदा रहा कि एक बार सबसे मिल लिया, एक दूसरे को जान लिया, that's it. So to help the employees get acclimated to their new workplace, or onboarding program is offered. For an employer, it is a fantastic time of year to outline all the characteristics that will assist employees to flourish as they learn more about the position in the company. Okay. Yes, ma'am. So then there are both formal and informal approaches in onboarding. Formal onboarding sometimes involves a series of training sessions, video chats, and activities of this nature. And informal onboarding is more flexible. As a part of this process, the new hire managers can observe and provide intuitive coaching to the new employee while they work under the tutelage of other team members, meet various stakeholders, and understand business norms. So the informal managers can brief them, they can treat new employees and give coaching how they can perform well in the organization. They can understand about their stockholders and
the understanding the business norms, what are their requirements, what the clients are expecting from them. So it is very easy to know the new hire to understand their role, because there is a gap. Some people think that he's a senior, he cannot discuss with me, or he or she cannot discuss with me, but uh, they can reduce that gap. They can consider them as a friendly, they can create a friendly atmosphere with their employees. Hmm. Okay. Yes, ma'am. And the last thing is, and the eighth slide is employee engagement. So employee engagement during onboarding for long-term retention and job satisfaction. So, ma'am, it is the main purpose of employee engagement is to engage the employee, are are more productive and satisfied and less likely to quit the organization. So so the employee engagement is also in employee engagement, they also provide training to them at the onboarding process, and it involves teaching them about the company policies and culture, training them to perform their roles. The onboarding process generally takes place first week and a month. So it is the basic for a first week and a month for new employees starting in the organization. To keep engagement rate high, onboarding should ideally be a long process and last up to a year. So if the onboarding session is good, so the employee can know the culture, and the retention of employees is high in the organization. If he get time to time promotions, if he get time to time everything, appraisals and bonus on time, and good management also. So the retention of employees is very high at this time. So, ma'am, in the COVID time, company culture. So the communicating and installing the company's values mission is very important to understand. However, there are several challenges during the COVID time. That means lack of communication, information overload, and lack of formal communication structure. So, thank you, ma'am, from my side. Okay. Okay, good. So, see, more or less, the presentation in itself looks good, right, Anjan? But the problem is the case study that we shared was different, right? Yes, And ma'am. purely on the challenges that I have mentioned in the case study, I asked you all to prepare a case study talking about the solutions in terms of, how you can really give solutions. I know you have worked with Converges, the company that you were talking about, and you have taken examples from there. But the idea is not to use anybody's name. For example, you become an HR manager for a new company. It can be any company in the world, right? So as an HR, my job is to teach you or tell you how you have to create an onboarding process. Depending upon company to company, culture to culture, a lot of things can change, right? In between, like you yourself said, right? Employee engagement can be there. There can be troubles where people are not meeting. They are just working from home, or they are working remotely, and hence they don't meet, right? So we are missing out on that culture. But keeping all those things aside, how one person should design as an HR manager a complete onboarding process, so that suppose you join a new organization, you see from your point of view what you all want to know about the company, so that it makes you comfortable to join that organization, comfortable in your job responsibilities, comfortable in your KRAs that you have to do, right? Comfortable in the managers that you're meeting or the people you're going to work with, comfortable with the environment and the culture, the seating arrangements that is being there. So we have to see and design an onboarding program keeping those things in mind. So some of the elements are there in your presentation, but some of the elements were not there, right? So So the whole idea was, sorry, I could not hear you. Your voice is not coming. at the end, I have to give the solutions. Yes, complete. So that is what the question was in the last, that design a proper onboarding program, keeping all these challenges of this company in mind. That suppose the challenge number one was that company was rapidly growing. Rapidly growing means there are a lot of people joining in, right? More people joining in means that we have a lot of onboarding happening for people. So that's one of the challenges. Then second was diverse roles. Everybody is not joining in one particular department. There are various department functions where people are joining in. So we have to design and think of that perspective.
right? Suppose you have 20 people joining at one time for onboarding. How will you design their onboarding? They're all from different functions. So there are few elements which we have to keep common so that you as an HR manager can take care of all that which is common. Then after that we separate them. How we separate them, like we studied in the presentation class also, then we give it to them functionally. So whosoever is their reporting manager, understanding of job responsibilities and KRAs is HR's job for one time. आपने जॉब एनालिसिस दे दिया, व्हेन दे जॉइन आपने उनको समझा दिया कि ये आपका रोल है, उसको डिटेल में समझना, कैसे काम करना है, डे टू डे बेसिस पे क्या करना है, वो उनके रिपोर्टिंग मैनेजर की हेडेक है, दैट इट्स नॉट योर हेडेक, राइट? आपका फिर एचआर का काम क्या हो जाता है ऑनबोर्डिंग के अंदर, इज टू सी वेदर दिस न्यू पर्सन हु हैज जॉइंड इन व्हाटएवर डिपार्टमेंट हैज कंप्लीटली अंडरस्टूड देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द नेक्स्ट 3 months और नॉट. बिकॉज अगर हम नेक्स्ट 3 months पे कंट्रोल रख लेते हैं अपना एज एन ऑन बोर्डिंग और स्पेशलिस्ट, 3 महीने में शुरू के अगर हमारा अपना कंट्रोल रहता है एज एन एचआर उनके ऊपर, तो हमारे चांसेस ये होते हैं कि एम्प्लॉय विल स्टे फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. हमारा सबसे ज्यादा एचआर का मेजर पेन पॉइंट क्या है? मेजर पेन पॉइंट हमारा ये रहता है कि एट्रिशन बहुत है, राइट? लोग टिकते नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन. समटाइम्स दे डोंट इवन टेल द रीजंस व्हाई दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? फाइनेंशियल पार्ट तो चलो एक हो ही जाता है, पर फाइनेंशियल के अलावा भी कितने सारे रीजंस हो जाते हैं लोगों के जाने के. सो वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हेन वी कंडक्ट एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे is basically that people do not feel engaged in the organization. They don't feel that I am a part of the organization. So what as an HR we can do, and that is the problem that onboarding can solve. So इसीलिए onboarding बहुत major function हो जाता है आजकल organization में, and people actually spend a lot of time and money into designing training programs, right? So जैसे आपने training programs बीच में डाले कितने सारे कि कोर्सेरा के साथ वो कर लेंगे या उनको कुछ और टेक्निकल ट्रेनिंग दे देंगे, तो उनकी जो कॉम्पिटेंसी मिसिंग है या उनकी स्किल्स जो मिसिंग है, यू आर गेटिंग देम इन्वॉल्व इनटू लर्निंग ऑल दोस न्यू थिंग्स. So that is how you need to decide, right? So that's a very good point. So as I said, some points you really take care of really well, but some of the points were missing. Yes, ma'am. So maybe next time के लिए ना we will have this thing. Not next time. So you see, as I said, onboarding is a very creative process. It can be very, very creative. और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको एकदम डिफरेंट तरीके से इंगेज करना पड़ता है, बिकॉज बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास तो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दे कैन रियली स्पेंड टाइम एंड मनी इनटू डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कैप्सूल्स. प्रॉब्लम आता है एमएसएमई सेक्टर में, छोटी कंपनीज के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर, जहां बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता उनके पास लगाने के लिए, बट दे स्टिल नीड सोल्यूशन. और सोल्यूशन उनको ज्यादा क्यों जरूरत है? बिकॉज उनकी कंपनी की ब्रांडिंग ही नहीं है. People don't know these companies. They don't want to join these companies. पैसों के लिए ज्वाइन कर भी लेते हैं या रोल समझ लेते हैं या विजन ज्वाइन के लिए ज्वाइन कर लेते हैं, बट ऑनबोर्डिंग में हमें उनके साथ क्या ऐसा करना है कि वो ज्यादा लंबे समय तक हमारे साथ रुके. That's the whole point. Yes, good effort. Very nice. Okay, so Sushma and Vaidehi, are you going to present your case study? Or shall we move ahead? Uh, Guys, you there, Sushma? Vaidehi? Ma'am, I'm there, but there is a lot of network problems, so I couldn't get your question. Yeah, I'm asking about the presentation. Are you going to give the presentation? If not, then we'll start the class. Okay, so let's move on. So now today we're going to talk about competency mapping. It's one of the major topics again as a part of the entire talent acquisition. When we do sourcing for the people, when we write job analysis, when we do manpower planning, there is a very important segment of HR that every HR should need to understand that. प्रॉब्लम ये है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंसी मैपिंग बहुत अच्छे से नहीं होता है अभी भी.
And that is the reason, a major reason उसका ये रहता है organization में, why it doesn't happen is purely because there are too many people who join the organization. तो जहाँ 10,000, 20,000 employees की company हो जाती है, it gets little difficult to map the competencies for everyone. But it's a very important exercise that every HR should learn how to do it. Like competency we spoke about. Okay, chalo, let's ask this question to all of you. So, what do you think is competency and how competency is different from skills? What is your understanding as an HR individual on competency? Competency is a kind of eligibility as per the designated profile, like eligibility for a specific profile or a ability of a Eligibility means what? The qualifications, no, the ma'am, like experience? the roles and responsibilities that are required to be carried out carry out certain duty or role. Mhm. That person is fit for that. That person is competent for that position. Okay, so give me an example. So, suppose you have to apply for an HR manager's role. What are the competency you would require other than your skills? Other than the skill set, ma'am, experience, good communication skills, a background of team handling, then engagement with employers or a background record or some, some reviews, good reviews from the previous companies or employers. That's not competency. Those are reviews. They are recommendations and references. Then, ma'am, if I'm able to perform a task successfully, so if I have successfully been working in a designated sector, like in HR sector, since some previous years, I have designated, given my time to this field, like 3-4 years. So I am competent enough to carry out the duties. Okay. That means competency, like the person has enough skill set and experience to perform that role. That is, I think, is a competency. Okay. Good. All right. Anybody else? Anjan, Vaidehi, Sushma? Competency mapping is basically is the process of identifying and defining the knowledge, skills, and personal attributes required for a particular role, according to me. That is That's competency. competency mapping. What is Yes. competency and why competency or skill? There is a difference between them. Skill क्या होता है हमारा? Ma'am, skills means that means you have to require. Suppose if I want to go for an HR department as an HR, so I need what type of skills I required. So what kind of skills you would require for HR? Ma'am, employee engagement, appraisal 360 knowledge, and Okay. Good. we Yeah. So exactly. So there would be functional skills that is required. Those functional skills can be all the functions of HR, right? Your performance management skills, you need to know how to do competency mapping, KRA designing, all that, right? That's a skill. yes, Now ma'am. there is a competency which is required by every person to perform these skills in in a proper format, right? Ma'am, competency That is why competency becomes a mixture of all three. The ability to do of something. doing something, your knowledge that you have gained, which is your degree, diploma, whatever, and your skills, which is your ability to perform. Combination of all three is called competency. And those competencies we map for every individual in organization so that they can perform their job in a best manner. Whatever is required to do in their area of specialization. So suppose you have a knowledge, you are an MBA or you have a certification in HRM. That brings your knowledge because you have learned all those things. फिर आपने skills क्या सीखी उसके अंदर से आपने problem solving skill सीख लिया in your classes. You learn decision making skills, you learn analytical skills. ये सब skills भी सीख लिया आपने. Now whether you have the ability to perform the skills that you have and the knowledge you have or not. That is called competency. And how these competencies are mapped, we are going to talk about that in the class today.
So these are competencies. Number one is, three types of competencies are there. Number one is organizational competency. Organizational competency is an aspect of the business to be believed to be having a strategic value. So what kind of strategic value do we have? For example, an organization has their own set of values. We bring those organizational competency, we bring people who can really work on those organizational competencies. For example, some of the examples are given there. जैसे वॉलमार्ट का है वैल्यू प्राइसिंग. So Walmart अपने जो भी सामान बेचते हैं अपने किसी भी आउटलेट पे, they say that we are bringing value pricing to people. Value pricing means that whatever amount that you are paying, you are getting the good amount of services from that particular thing. So the product is cost effective, simplistically. Similarly, Nordstrom is a company which says that it's a customer service is their competency, that organizational competency based on the values. So every employee, whosoever is there in the organization, has to be customer service driven. Otherwise, people will not be required to do their task in a associate manner the way they are required to do. Third, McDonald's का example है quick service. So McDonald's की one of the value is that everything has to be done quickly. Every person who is there should not really be waiting for more than 5 or 7 minutes. That's the kind of quick services that they are providing. So that becomes one of the competencies organizational that they really live by. Similarly, Toyota ka reliability. Every product of Toyota, they say that people should be able to talk reliability synonymally to the product name. So the brand has created their own value like that. And that is the reason why we are calling them organizational competencies. So every organization, this is how you go and perform and create their organizational competencies. Second part of the competency is called फाउंडेशनल कॉम्पिटेंसी. इनको हम दूसरी भाषा में बहुत सारी बुक्स के अंदर अगर आप पढ़ेंगे या कहीं पर भी एचआर की भाषा में बात करेंगे, we generally call them rear wheel competencies also. So why do we call them rear wheel? Because they are not the major ones. They are the major ones that is required to be doing the job that is being assigned to you in an organization. So for example, आपकी foundational competencies क्या हो गई? Teamwork, oral communication, customer focus, adaptability, initiative, professionalism, you name it, and then you require all these attributes in you to perform your functional competencies on a daily basis in the organization. Then third आता है third आता है आपका functional competencies. Functional competencies are like what is required to be done. So like Anjan said that suppose you are an HR manager, so you need to perform these jobs in the organization, which is to recruit, to select, to train and develop people, to appraise them, then to create a drafting of descriptions for proper job analysis, job descriptions, or to use assessment tools for their competencies. So these are few of the functional competencies that is required by you to perform in a organization. So that's how the classification of competencies have happened in three different formats. Now, suppose you are an HR manager and you are required to do competency mapping for the entire organization. How do you think you will get that knowledge to write down their entire thing properly? So what we generally do is review their information related to the job responsibilities which we have already done in job analysis part. So you will write the job analysis, you will understand the role properly, you will see what the role really compasses of. Then you write down their job responsibility neatly, and then you will review that information either through a subject matter expert who understands how this particular role is to be done in the organization, or through by observation method. हमने 4-5 methods पढ़े थे job analysis के, उसमें से हम कोई भी method use कर सकते हैं, which is questionnaire method, observation method या assessment method. कोई भी method आप use करके review कर सकते हो उसकी information को. Then write down the task. Now, how job responsibilities are different from tasks? Tasks are something that we perform on a day-to-day basis in the organization, right? So, for example, अगर आपका एक काम है recruit करना किसी को, that is your job function, right? Now, recruitment करने के लिए आप क्या-क्या task करोगे? What are the important tasks that you will perform to recruit somebody in the company?
Guys, the question is to all of you. You have to speak. You all can hear me? Yes, ma'am. यहाँ से प्रॉक्सी के लिए बैठे होते हो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं सिर्फ आई एम आस्किंग समथिंग एटलीस्ट द रिस्पॉन्स शुड कम Ma'am, you are audible, ma'am. आई एम ऑडिबल बट स्टिल द आंसर इज नॉट कमिंग फ्रॉम योर साइड सी इफ यू गाइस जस्ट वांट टू अटेंड द क्लास फॉर अटेंडेंस एंड नॉट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट फिर तो कोई फायदा ही नहीं है मैं ऐसे रिकॉर्ड करके भेजती रहती हूँ सारे के सारे क्लासेस फिर इंटरेक्शन की जरूरत ही नहीं है हमारी अगर हम क्लास कर रहे हैं 2 घंटे की तो आइडिया इज टू हैव एन इंटरेक्शन आई अंडरस्टैंड कि वीडियोस ऑन नहीं हो सकते हैं चलो प्रॉब्लम है नेटवर्क का but at least you guys can answer the questions if I'm asking something. Ma'am, the process of writing competency is, ma'am, first we have to review the information about what are the other competitor companies introducing the new technologies. That's not the question I asked, Anjan. The question was that if you have to recruit somebody, recruitment is one of the competency, which is functional competency. What are the tasks you will perform to recruitment? Wait, just give me a moment.
Yeah, sorry guys. I had a very important call from a client. Okay. So the question again to all of you is the same, that suppose you are doing a functional role of HR, how are you going to write down your task on a day-to-day basis? I want to know from you. See, I want to know from you so that, tomorrow if you're going for a job somewhere, you're aware that what is expected from me. What is it that I have to do? Some of you have already been experienced, some of you are already working in the same function. So you need to know how you can really write down very clearly all these things that we are going to talk about now. So yeah, who is going to talk? Anjan, Sushma? Yes, ma'am. Ma'am, as a if I talk about myself, if I go in the recruitment team, suppose, Hmm. so as an HR, first I will write down what is the what is the identify of hiring need. What is the need of hiring? Hmm. Yeah, how And will you do hiring? So that is what you'll no, have no, to write down. no, ma'am, identify the hiring need first. What Okay, is, got it. ठीक है. and then after that I will write a job description. Okay. As a write the job description about, like if I want to hire an employee in IT, so what are the key skills are required? What is the qualifications? So that I will Hmm. mention job location and CTC that is mentioned in the job description, Okay. and advertise the position. Okay. Advertise the position means if I put that information job description on the company careers portal, or Hmm. I can contact to a third party, or uh, I will contact to the employer, so employees also who need the job. हाँ, इसी के लिए सिंपलर करने को मैंने पूछा था कि सपोज आपको करना है काम विच इज रिक्रूटमेंट, वन फंक्शन, सिंपल Yes. इन एचआर. So to do recruitment, what are the things on a daily basis that you will perform? क्या क्या टास्क करेंगे हम लोग हर रोज? सपोज, और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर. सो सपोज यू हैव टू डू मॉपिंग एट होम. आपको पोछा लगाना है अपने घर में, राइट? पोछा लगाना इज अ फंक्शन. नाउ व्हाट आर Yes, द ma'am. थिंग्स दैट यू विल डू टू डू पोछा लगाना? क्या क्या टास्क करेंगे हम? मैम पहले पानी लेंगे बकेट वगैरह में, करेक्ट. एब्सोल्युटली. पानी लिया हमने. बकेट में पानी लिया जाएगा, फिर उसके बाद फिनाइल वगैरह जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो यूज करेंगे, करेक्ट. हमने क्लीनिंग एजेंट यूज किया उसके अंदर. और फिर वाइपर वगैरह, और जो हमारे पास ऑलरेडी वेस्ट क्लॉथ पड़ा है तो वाइपर के थ्रू, स्पॉट के थ्रू हम उस पे वहां पे फ्लोर पे रब करेंगे उस चीज को, बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट. सो ये हो गया हमारे टास्क फॉर द मॉपिंग. सिमिलरली फॉर राइटिंग रिक्रूटमेंट, कि हमें रिक्रूटमेंट करनी है, रिक्रूटमेंट के लिए टास्क क्या क्या करेंगे हम? वी विल आइडेंटिफाई जॉब बोर्ड्स, जॉब पोर्टल्स, यस कहाँ मैम। से हम करना चाहते हैं. देन लाइक यू सेड दैट वी विल डू जॉब पोस्टिंग. हमने पोस्टिंग कर दी, उसके ऊपर कंपनी के बारे में जो भी हमने लिखा हुआ है सब कुछ डाल दिया हमने. थर्ड इज देन वी विल सी वेदर विच पोर्टल हैज मोर probability of getting the people that we are looking for, right? Not every portal will have all kind of people. So then we will probably select our portals alongside that. So these are the tasks that you will do. Then फिर आपके पास resumes आएंगे, आप उनको review करोगे, then you will go through them in detail. So this is the entire daily task that you are going to perform for one function. This is what we have to write down for everybody in the organization. Imagine we are just talking about HR का एक function के बारे में. अभी हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये सब लिखना है कि उनकी रिव्यू करना है, उनकी इन्फॉर्मेशन क्या रोल प्ले करने वाले हैं. एंड देन वील हैव टू राइट डाउन देयर टास्क फॉर एवरी डे दैट दे हैव टू डू. टास्क जब लिख लिए उसके बाद सेकंड नेक्स्ट स्टेप आता है राइटिंग केस एप्स. नाउ व्हाट इज केस एप्स? कैसे लिखेंगे हम कि हमें सपोज पोछा लगाने के लिए हमें क्या क्या चीजें की जरूरत है बंदे के अंदर. What are the important things that we are looking at? So for recruitment, what are the KSAPs of the person? KSAPs मतलब knowledge, S से skills, A से abilities, and P से personal characteristics, right? So now suppose somebody has very good knowledge, degree है, diploma है,
स्किल्स भी हैं प्रॉपरली, एप्टीट्यूड कंप्लीटली, एबिलिटीज भी हैं करने के लिए, पर उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी है कि बहुत लेजी है, या बहुत ज्यादा काम को प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है, कल करेंगे परसों करेंगे इस तरीके से करता रहता है। सो डू यू थिंक दोस काइंड ऑफ पीपल विद सच काइंड ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी एबल टू डू देयर नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी? दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दैट। इसीलिए हम लिखते हैं फिर वहां पर प्रॉपरली फॉर हर पोजीशन के लिए, हर टास्क के लिए, या वी राइट डाउन देयर केस एप्स, तो कि क्या नॉलेज चाहिए आपको इन, जैसे सुमन ने कहा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, so this is what we have to write down for them. Then we will sort these case apps for the positions that they are performing, the function, the role that they are performing in the organization. वहां पर इनका सॉर्टिंग हो जाती है, एंड देन उसके बाद हम लिखते हैं उनकी कॉम्पिटेंसीज, वो कॉम्पिटेंसीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और जिसकी मैपिंग हमें करनी है, राइट? अब टास्क कैसे लिखे जाते हैं, व्हाट इज द टास्क, ये हमने ऑलरेडी बता ही दिया। इट्स अ यूनिट ऑफ वर्क और सेट ऑफ एक्टिविटीज नीडेड टू प्रोड्यूस सम रिजल्ट। So whatever result that you are planning to bring in your day-to-day task, day-to-day job responsibilities, this is what task is written. Generally, in an English format, we call it an action verb, where what we do is what we are physically talking about as a task. Then आता है functional competencies, कैसे लिखनी है। अब आपने जॉब एनालिसिस लिख लिया, प्रॉपरली रिव्यू कर लिया जॉब को सब्जेक्ट मैटर के थ्रू, हमने कंपनी का स्ट्रैटेजिक विजन पढ़ लिया, वी नो कि कहाँ हमारा मिशन जा रहा है, किस तरीके से हमें कंपनी के अंदर रोल्स परफॉर्म करने हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है वो भी हमने अच्छे से लिख लिए या पढ़ लिए या हमने उनको स्टडी कर लिया। फिर हमने लिखा पोजीशन डिस्क्रिप्शंस, कि हर एक कंपनी में हर कोई रोल जो भी परफॉर्म करेगा, बिकॉज रोल्स आर नॉट इंडिविजुअली ड्रिवन, इट इज नॉट समथिंग कि अंजन ही रिक्रूटर होगा या सुषमा ही ट्रेनिंग डेवलपमेंट करेगी या सुमन ही सिर्फ परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगी। वी राइट द रोल फर्स्ट, दैट in order to run an organization, what are the different roles that is there, that exist, and all the roles that is being written in the organization has nothing to do with people, कि कौन आके उनको परफॉर्म करेगा। once you start filling in those positions, roles को पूरा करने के लिए, then we start analyzing people's characteristics, इसीलिए केस एप सब वहां पर रोल प्ले करने लगते हैं। सब वहां पर आ जाता है पोजीशन डिस्क्रिप्शंस, जॉब अनाउंसमेंट हो गई, आपने एनालिसिस कर लिया जॉब्स का प्रॉपरली, फ्लो चार्ट्स बना लिए कि कम्युनिकेशन कैसे होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कैसे होने वाला है, किस तरीके से लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कहाँ किसी का रोल खत्म होगा दूसरे का रोल शुरू होने वाला है। सो प्रॉपर फ्लो चार्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे। देन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट विच इज द हायरार्कीज, जो हमने स्ट्रैटेजिक एचआरएम में पढ़ा था कि वहां कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का रोल वाइज, जिसको आप हायरार्की दे दोगे कि ये रोल परफॉर्म कर रहा है सीईओ का, सो दैट इज व्हाई दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हिज जॉब इज लाइक दैट। ये रोल परफॉर्म कर रहा है सीएफओ का, तो इसीलिए उनका फंक्शन इस तरीके का है, ये यहाँ पर इनकी प्लेसमेंट हो गई है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। सो दिस इज हाउ वी डू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरिंग। देन आता है थर्ड पॉइंट इसके अंदर, फोर्थ पॉइंट इसके अंदर, गवर्निंग रूल्स, कि गवर्नमेंट के क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनको हम कहाँ पर डाल रहे हैं, उनका क्या इनके ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है। जैसे मिनिमम वेज एक्ट आ जाता है, कि जहां हम रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं एम्प्लॉय का कि इसके बगैर कंपनी नहीं चलेगी, बट वहां पर उसका कोई एक्ट आ जाता है जिसके कारण हम उसको पैसा नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपरली, मिनिमम वेज नहीं आ जाता है, प्रॉपर कॉम्पनसेशन के लिए आ जाता है, तो सीईओ के लिए हमारी कंपनी में ऐसा बोला जाता है कि गवर्निंग रूल्स ये है कि उस पे इससे ज्यादा पैसा नहीं दिया जा सकता। सो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन रियली वर्क अराउंड दोज गवर्निंग रूल्स एंड पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट। फिर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कि हाउ माय कंपनीज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आर, व्हाट इज द बार, व्हाट इज द लिमिटेशन दैट आई एम फिक्सिंग फॉर ईच रोल। तो सपोज आई एम हायरिंग क्या 4 नाम है? of you, क्या नाम है? whether you have to keep नया yourself बना on mute, देख के तू चॉइस करिए से जाना है कि whether he lot of noise is coming from background, can you please mute yourself? Thank you. फिर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अब हर एक के लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या बार ऑफ देयर अचीवमेंट इज देयर। अब सपोज आई हायर ऑल 4 of you फॉर अ सिमिलर पोजीशन इन एन कंपनी,
कि अंजन के लिए भी एक पोजीशन है, वैदेही भी सेम पोजीशन पे है, सुषमा भी, सुमन भी, ऑल फोर ऑफ यू आर ऑन द सेम पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ चारों एचआर मैनेजर है बिकॉज कंपनी इतनी बड़ी है कि 4 एचआर मैनेजर्स रख सकते हैं. जब हमारी पोजीशन सेम है, रोल्स रिक्वायरमेंट सेम है, सब कुछ चीजें सेम है, तो हमारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स भी सेम होने चाहिए. वी कैन नॉट अलाउ कि अंजन इज एन एचआर मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, but it's okay if he performs 80% of his job responsibilities or 80% of his competencies he brings. राइट, वी नीड टू हैव द स्टैंडर्ड कि और चारों के चारों एक पोजीशन पे ज्वाइन करने वाले हैं, चारों का काम भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा. सो फॉर देम देयर कॉम्पिटेंसी नीड्स टू बी मैप्ड एंड शुड बी गिवन सिमिलर रेटिंग्स. अगर अंजन के अंदर एनालिटिकल स्किल्स 4 है आउट ऑफ 5 के स्केल पे, सो वैदेही में भी 4 ही चाहिए, सुमन में भी 4 ही चाहिए. इट कैन नॉट बी 3 2.5 इन समबडी एंड 4 इन समबडी. इट कैन नॉट परफॉर्म. वहां पर हमें पता चल जाएगा फिर कि काम होने वाला नहीं है अच्छे से अगर कॉम्पिटेंसी ही प्रॉपरली नहीं होगी. सो दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. दिस इज वेयर द कॉम्पिटेंसी स्टार्ट प्लेइंग द रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे ही फिर लॉज आ जाते हैं बहुत सारे जो हम जिनके लिए हम गवर्न करते हैं, सारे के सारे आपने पढ़े ही हैं. एंड देन ट्रेनिंग मैनुअल्स फॉर प्रोसेसेस. कैसे प्रोसेसेस रन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबके मैनुअल्स लिखे चले जाते हैं. नॉट जस्ट इन एचआर पॉलिसीज एंड मैनुअल्स, इन एवरी फंक्शन. सो आप देखेंगे अगर आप मार्केटिंग के बारे में जानते हैं तो मार्केटिंग मैनुअल्स होते हैं, सेल्स मैनुअल्स होते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में उसमें बताया गया है. सो ये सारी की सारी चीजें देन वी स्टार्ट राइटिंग अबाउट इन द कंपनी. नेक्स्ट आता है टिपिकल प्रॉब्लम्स कि क्या क्या प्रॉब्लम ऑन अ डे टू डे बेसिस इस पोजीशन में आने वाली है. तो सपोज अभी हम एचआर मैनेजर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं. चारों लोग हैं, चारों का प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हमने सेम रखा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिमिलर हायर किया हमने. फिर हमें ये देखना है कि एक प्रॉब्लम आती है रोज ही कि हमें बहुत ज्यादा लोग नहीं मिलते हैं, लोग ऑफर ले लेते हैं और ऑफर लेकर छोड़ जाते हैं कंपनी. दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम इन द रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री. सो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. और या फिर हम जब इंटरव्यू ले रहे हैं या हम स्किल एनालिसिस कर रहे हैं, हम ये सवाल इन चारों से पूछ रहे हैं कि अंशित, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. वी विल डू असेसमेंट सेंटर विद हिम. Similar things we will do with Suman and Vaidehi, so that we know that these are the problems that they are going to face on a day-to-day basis, performing their role, and this is how, using this particular competency or skill, they basically resolve that particular problem. राइट. फिर आता है टर्न अराउंड टाइम कि अब आपके अगर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग्स हैं या आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल है, उसका टर्न अराउंड टाइम कितना है, जिसको हम नॉर्मल कॉर्पोरेट भाषा में इसको टैट भी कहा जाता है. तो व्हाट इज योर टैट टाइम अराउंड. आपका टाइम अराउंड हो गया कि रिक्रूटमेंट अगर आपको 4 दिन में करनी है तो करनी ही है. देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग इट. वो आपके ऊपर, आप कहीं से भी लेकर आओ. आपके पास जॉब पोर्टल्स हैं, एजेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट्स वाले लोग हैं या रेफरेंसेस हैं, वॉट एवर मॉडल दैट यू वांट टू यूज is your problem. Company has nothing to do with it. They have given you a time. That this is the turnaround time. This is the limitation. This is the timeline that you will have to fulfill. You will have to do that job. Then similar point is internal external complaints. अब एचआर रोल ही ऐसा है कि जहां पर आपके कस्टमर ज्यादा जो होंगे वो इंटरनल एम्प्लॉयज होंगे. सो देन यू विल हैव लॉट ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटेड टू योर जॉब. सो नाउ यू विल हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग वेरी क्रिस्पली, that these are the kind of problems I'm going to face, these are the kind of external problems that is going to come, and how are we going to handle this particularly well so that it doesn't affect my role in the organization. फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, वर्क इक्विपमेंट्स एंड जो भी आपके कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, कि हमारे को क्या नॉलेज की जरूरत है टू परफॉर्म दिस जॉब. So similar example continuing for HR manager, what are the kind of tools and technology knowledge you require? Do you really need an HR analytics course separately? Because आजकल की डिमांड में है बहुत ज्यादा. या फिर कोई सॉफ्टवेयर की नॉलेज है आपको, जैसे सैप में काम किया हुआ है या जोहो में काम किया है या केका एचआर में काम किया है, जो भी एचआर के मेजर टूल्स हैं, whether somebody has really used those softwares or not. So that information will come. That becomes one of your guide for writing the competencies that we need to do. फिर सेकंड आता है जो भी हमने पढ़ा ही था कि राइट डाउन योर मेजर जॉब का, कि क्या क्या करने वाले हैं एज एन एचआर मैनेजर. उसके अंदर आपके केसएप्स लिखे जाते हैं. केसएप्स इज योर स्किल, नॉलेज, एबिलिटी एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स. नाउ 4 of you are going to perform similar job in an organization.
बट किस तरीके से आपका काम ज्यादा पसंद किया जाएगा, कैसे लोग तारीफ ज्यादा करेंगे, या आप उस जॉब स्टैंडर्ड्स को कैसे ओवर अचीव कर लेते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स। बहुत लोग होते हैं जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, बहुत प्रिविलेज नहीं है, सो दे लर्न वेरी अर्ली इन देयर लाइफ हाउ टू परफॉर्म हार्ड वर्क, रियली रियली हार्ड वर्क, कि कुछ भी करना है मुझे सक्सेस होने के लिए, उनको पता चल जाता है बहुत अर्ली इन देयर लाइफ that no matter whatever degree I have got, diploma I have got, one more personal attribute that I carry is my hardworking nature. कि कुछ भी करूंगा, सीख लूंगा, कैसे भी कर लूंगी, but I will learn that. Similarly, some people can really perform wonderful roles in the organization अगर उनकी थोड़ी सी knowledge भी कम है या skill भी कम है, but उनका confidence इतना अच्छा होता है that they perform all the tasks without any problems at all. बिकॉज कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़िया है उनके अंदर दैट दे लर्न द नॉलेज, दे लर्न द स्किल्स ऑन द जॉब वाइल परफॉर्मिंग दैट जॉब। तो लोगों को डिफरेंशिएशन ही नहीं पता चलता है कि जब हमने उनको हायर किया था उनके पास ये नहीं थी चीजें, प्योरली बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस। सो इसीलिए पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये सब चीजें हम बचपन से ही देखना शुरू कर देते हैं अपने क्लासरूम्स में भी। अब 35-40 के ग्रुप में अगर हम क्लास में अटेंड करते थे स्कूल्स या कॉलेजेस में, तो रिमेम्बर कि एक या दो ही बच्चे टॉपर बनते हैं। सेम टीचर है, सेम सब्जेक्ट है, सेम सिलेबस है, पढ़ाने का तरीका भी सेम है, कोई स्पेशल अटेंशन भी किसी को नहीं मिल रही है, बट स्टिल यू विल सी दैट वन और टू पीपल विल आउटशाइन एवरीबडी एल्स. Why these people outshine everybody else is purely because of their personal characteristics and attributes. Right? So this is how the organizations also take care that in consideration while writing down the competencies. फिर आ जाता है आप ग्रुप कर लेते हैं उनको कॉम्पिटेंसीज को, कैसे ग्रुप कर लेते हैं इन फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, कि आपको क्या लेबल करना है, कौन सा जॉब टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, क्या क्या स्किल्स एबिलिटी और नॉलेज उसके लिए चाहिए। ऐसे ही आप लेबल कर लेते हैं फंक्शनल उसको दूसरे तरीके से, कि क्या क्या चीजें उसके अंदर करना जरूरी है हर एक जॉब परफॉर्म करने के लिए। And then you create these kind of worksheet in an organization. So this is a real life example of one of the sheets that we create in the organization during competency mapping. So suppose अगर आपका job role है curriculum development, that's one of the tasks that you will have to do. Important task आप क्या क्या करोगे उस competency curriculum development को करने के लिए? आप सबसे पहले कर रहे हो write behavior based instructional objectives. Then research training content. Then build contacts, organization and associations from various organizations. Then write training content to facilitate learning instruction. So ये आपकी डेली टास्क आ गए जो आपने उसमें परफॉर्म करने हैं। अब आगे आपका केस एप्स कि क्या क्या आप किस तरीके से करोगे। So this is an example of that. So ability to establish instructional objectives, ability to write in a good and clear, concise grammatical English, ability to research training content to obtain information that is relevant, ability to organize instruction material in sequence, उसका एक organization आपके दिमाग में होना चाहिए, किस तरीके से आप थ्योरी और प्रैक्टिकल को इंटीग्रेट करके अपना कोर्स मटेरियल डिजाइन कर रहे हो। एंड देन नॉलेज अबाउट एडल्ट लर्निंग थ्योरी, अगर आपके जो ऑडियंस है, जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है जिसके लिए भी आप करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एडल्ट लर्निंग थ्योरी और उसके इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दिस इज हाउ यू डू योर केस एप्स, राइट। वहां से निकलकर आ गया आपका फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज। मेजरेबल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, प्रॉपरली लिखी होनी चाहिए एंड रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशनल mission and vision. This is how your leadership competencies comes in. Another example. Right? So for suppose अगर आप HR मैनेजर हो, HR मैनेजर बनने के लिए भी आपको लीडरशिप कॉम्पिटेंसी चाहिए। तो आप क्या क्या चीजें टास्क करोगे और क्या क्या उसके अंदर आपको कॉम्पिटेंसीज की जरूरत रहेगी। दिस इज हाउ यू राइट। लीडिंग चेंज, लीडिंग पीपल, बिल्डिंग कोएलिशंस एंड कम्युनिकेशंस, रिजल्ट ड्रिवन एंड बिजनेस एक्यूमेन। क्या क्या आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए, कॉम्पिटेंसीज होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रेजिलियंस होनी चाहिए, इंटेग्रिटी, कल्चरल अवेयरनेस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरप्रेन्योरशिप, everything that you are writing. And then in last business acumen you will see is your functional competencies that is there. Right? Any questions on this?
Any questions, guys? No, ma'am. Okay. No, Then ma'am. I'll give you a very simple exercise to do right now. How do you write your competencies, right? And this is your personal things that you're going to write. Right? Now, the same example that you were continuing, that all four of you are going for a job, which is a HR manager's job. Right? Now, for HR manager's job, what do you think is the competencies that you need? You need to divide your competencies in two parts. One is your foundational and one is your functional competencies. This we are doing right away. So you take out your paper and pen, write down and share it with me on WhatsApp. Or if you want to create a slide and you want to do this work there on your computer, you can do that. So I'm repeating the question that to get a job of a good HR manager, no matter what industry, what company, what are the functional and foundational competencies that is required? मैम एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर मैम सपोज यू आर एन एचआर मैनेजर You're going for a job of HR manager. What are the competencies that you require? Your foundational competency, which are examples are given here in this slide, and your functional competencies. फर्स्ट इज फाउंडेशनल एंड सेकंड इज फंक्शनल G. So foundation are these, जिसके जिसके बेसिस पर आप फंक्शनल पूरी कर सकोगे, क्योंकि टीम वर्क की चाहिए होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए होंगी, कस्टमर फोकस भी चाहिए होगा when you are performing your functional responsibilities or competencies. So that's why these two go hand in hand. मैम इट शुड बी इन स्लाइड्स फॉर्मेट Sorry? वी हैव टू परफॉर्म इन प्रेजेंटेशन हाँ, just create right away ना, यहाँ पर ही create कर लो, एक presentation slide बना लो and just write it down. You're just doing an exercise to understand whether you've understood clearly or not. This is for everyone. Suman and Sushma, you can hear me, right? when we Yes, ma'am, working on it. Okay, good. tomorrow we have to perform No, we are doing right away. No tomorrow. इतना कोई बड़ा exercise नहीं है ये. Ma'am, can we share here or to the WhatsApp only? You can share here also. अगर आप कंप्यूटर पे बना रहे हो, if you are writing on a piece of paper, then you can send it on WhatsApp. Click and Ma'am, send it. I was typing in a WhatsApp to you, so हाँ, कोई बात नहीं, वो कर. I have already done the functional one, ma'am, to your WhatsApp. Sure, दोनों एक साथ कर दो.
So then I'll read it out here in the group. Done?
Does Suman have shared hers? गुड जॉब सुमन। एंड सपोज अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसी लिखनी होगी इसके साथ, वो कैसे लिखोगे? Good job, Anjan. But these are just foundational. You're working on functional, I guess. Good job, Anjan. ओके मैम, बस अभी फंक्शनल भेज रहा हूँ अभी। Yeah, organizational can be leadership depending upon if we need. The role requires that. Oh, conflict resolution for sure. Teamwork and excellent communication. Excellent communication is more of a function foundational. Same with soft skills and active listening. Organizational competencies would be which is matching our values. So suppose अगर किसी कंपनी का values है risk taking ability या professionalism. So HR manager's job is to showcase those values in them, and then ensuring that everybody who joins the organization should also have the similar abilities, skills, competencies. Reducing communication gaps between employees of different levels. Yes, it is a good organizational. Sushma, we are waiting for you also to share. Anjan and Suman has shared.
Functional competency, Anjan, is writing the ability to collect and analyze data. He is one of the most important resource management skills. HR needs to anticipate hiring needs. HR needs to strike a balance between staffing needs and budgets. हाँ, बट जहां से भी आप लोग कॉपी कर रहे हो ना, सिमिलर कॉपी किया है सुमन ने भी और अंजन ने भी. It has to be much more than these three. Hiring needs तो आपने निकाल लिए, फिर उसके अलावा और क्या करोगे? No, your functional competencies are everything that comes under functions of HR. So not just hiring need or analytical needs or looking between staffing and budgeting. It is much beyond that. Understanding people's requirement in terms of their training and their learning and their professional growth. Knowing people's behavioral skills. That is one of the areas that HR needs to work on almost on a daily basis. You need to handle conflicts resolution. So for conflict resolution, फंक्शन है एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. अब उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपके अंदर क्या स्किल की जरूरत रहेगी? थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, राइट? All that is there written in Google may not be correct. You need to understand your own function that you are going to perform as an HR manager in the company and then write down these. वरना तो यूनिवर्सल हो जाती ना ये सारी. अगर गूगल वाला ही सच होता या जो भी लिखा हुआ है किताबों में वही सब सच होता तो फिर वो यूनिवर्सल हो जाता, फिर वो रोल भी एक जैसे ही रहता. बट एचआर मैनेजर ऐसा रोल है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में हर प्रोडक्ट और सर्विस के साथ डिफर करता है. वो क्यों डिफर करता है? बिकॉज कुछ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे बहुत ध्यान देते हैं, कुछ हायरिंग के लिए बहुत ध्यान देते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं. So depending upon what key functions that you are going to perform and how are you going to attribute your skill areas, knowledge, personal attributes with them. That is how you write competencies. इसीलिए मैंने आपको जब क्लास शुरू कर रहे थे हम कि competencies राइटिंग करना, बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा सोशल मीडिया पे, गूगल पे. बट व्हेन यू एक्चुअली सिट अक्रॉस इन योर कंपनी राइटिंग इट डाउन, ट्रस्ट मी, वी फेस सो मच ऑफ चैलेंजेस. हमें समझ ही नहीं आता था कि कैसे लिखा जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप, अभी तो हम सिर्फ एक रोल की बात कर रहे हैं विच इज एचआर मैनेजर. इमेजिन अब एक कंपनी में कम से कम 50-60 रोल होते हैं. फॉर ऑल 50-60 रोल्स यू हैव टू डिजाइन दीज कॉम्पिटेंसीज. फिर इनको मैप करोगे. अभी तो हम लिख रहे हैं सिर्फ, मैपिंग कैसे होगी वो भी देखना है ना. जैसे हमने ये एग्जांपल दिया, सपोज एक उठा लेते हैं जो आप लोगों ने कॉम्पिटेंसी बोली है फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज में, जिसे आप लोगों ने बोला कि हम कर लेते हैं हायरिंग नीड्स एंटिसिपेट करना आना चाहिए. तो अब आपने चारों ने हायरिंग नीड्स एंटिसिपेट कर ली. अंजन ने अपनी, सुमन ने भी, सुषमा ने भी, वैदेही ने भी. ऑल 4 एचआर मैनेजर्स कर लिया आपने हायरिंग नीड्स एंटिसिपेट. अब हायरिंग नीड्स को आपने देख लिया कि कितने लोगों की जरूरत है, कहाँ पर गैप्स है, क्या करना है. अब आप उसको परफॉर्म कैसे करोगे? हायरिंग नीड्स को गैप को मिटाने के लिए व्हाट आर द स्किल्स दैट यू विल रिक्वायर. सो सपोज मान लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जरूरत रहेगी उसमें, या प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी की जरूरत रहेगी. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है कि अंजन के पास ऐसा एक्सपीरियंसेस हो कि उसको आउट ऑफ 5 के स्केल में सिर्फ 3 तक ही आता हो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, उसके आगे नहीं आता हो. आई मीन हिज एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज 3/5, राइट? वेयर है सुमन ने, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, बहुत सारी लाइफ के प्रॉब्लम भी देखे, फंक्शनल में भी देखे, ऑर्गेनाइजेशन में भी देखे. सो सुमन की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज मच बेटर देन अंजन. तो हो सकता है कि वो 5 में से 4 हो. Similarly for Sushma, because she's a mother of a child, she understands all of problems at home also. वही सारे की सारा वही mindset problem solving का वो organization में भी use कर लेती है. She's very calm and composed. She's not really triggered very easily. गुस्सा ही नहीं आता है. So उनकी problem solving skill हो गई 5/5. So this is how you now map for every role, for one function that you are going to perform. For that function you are writing down competency, एंड जितने अलग अलग लोग अब उसको परफॉर्म कर रहे हैं
उन चारों पांचों छह जितने भी लोग हैं उन सबको आप मैप कैसे कर रहे हो उनकी रेटिंग्स को, कॉम्पिटेंसीज को. दिस इज हाउ कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज बीइंग डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. और हर एक कॉम्पिटेंसी को अलग, जनरली हम पांच पांच लेकर चलते हैं कि 5 ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसी है, 5 फाउंडेशनल कॉम्पिटेंसीज है, 5 फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज है. 5 5 निकाल के चल लिए, हर एक एम्प्लॉय के 15 हो गए. 15 का आप एक चार्ट बना लेते हैं, हम एक्सेल शीट पे भी बन सकता है, अब सॉफ्टवेयर भी आते हैं रेडीमेड. उस पर आपने उनकी रेटिंग्स करना शुरू कर दिया. किस बेसिस पे रेटिंग हो रही है कि आपने जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जब आपने उनको हायर किया, उसके बाद आपने अप्रेजल्स किए, तब आपने उनको देखा, मैप करा उनको कि किस तरीके से वो लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. थर्ड, आपने उनसे क्वेश्चनेयर बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे या उनको ऑब्जर्व किया डेली बेसिस पे अपने जॉब करते हुए, उसके बेसिस पे आप उनको रेटिंग देना शुरू कर देते हैं. दिस इज हाउ कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज डन. अब कॉम्पिटेंसी मैपिंग का यूज कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा? हायरिंग के टाइम पे. क्योंकि जब आप हायरिंग कर रहे हो, लोगों की कॉम्पिटेंसी मैप कर रहे हो, यू नीड टू कीप दैट रिकॉर्ड विद यू, सो दैट टुमारो अगर अंजन को प्रमोशन देना है मुझे, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो इन 4 कॉम्पिटेंसी में कितना था, नंबर्स क्या थे, आउट ऑफ 5 के स्केल पर हमने उनको क्या नंबर दिए थे. सो अगर प्रमोशन करनी है तो किस लेवल तक ले जाना होगा उन कॉम्पिटेंसीज को, सो दैट अंजन कैन बी प्रमोटेड नेक्स्ट ईयर या अगले 2 साल में जब भी. So this is how succession planning or promotions and transfers or appraisals are decided in the companies. सिमिलरली, जब आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्लान बनाना होता है एम्प्लॉयज के लिए, तब आप इन कॉम्पिटेंसी मैपिंग का यूज करते हो, बिकॉज यू हैव अ वेरी क्लियर चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू कि किसको कॉम्पिटेंसीज पे ट्रेनिंग की जरूरत है. उस कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं, या तो खुद इंटरनली या ऑटोमेटिकली जो बाहर से एक्सटर्नल ट्रेनर्स के थ्रू आप करवाते हैं, वहां पर आप ग्रुप करके लोगों को बांटना शुरू कर देते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रही हूँ कि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सुमन और रंजन की 3 और 4 थी, सुषमा की 5 आउट ऑफ 5 थी, तो सुषमा को प्रॉब्लम सॉल्विंग में जरूरत नहीं है ट्रेनिंग की. अंजन और सुमन को जरूरत है, तो हमने उनके लिए जब भी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग हो रही है, वहां हमने उनका नाम डाल दिया कि दे विल बोथ अटेंड दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो दैट देयर कॉम्पिटेंसीज कैन बी इम्प्रूव्ड, बिकॉज दैट्स अ रिक्वायरमेंट टू डू द जॉब, राइट. सिमिलरली, ऐसे ही हर एक रोल के लिए हम लोग लिख लेते हैं, उसी के बेसिस पर ही आगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिसाइड किए जाते हैं. इसीलिए कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर ट्रेनिंग नीड एनालिसिस ऑल्सो, so that your identification of training needs are very easily comes out. एक बार की एक्सरसाइज है हर साल करने के लिए, and then you clearly do that. Right? Competency mapping इतना सॉलिड मेथड है हर एक रोल को मैप करने के लिए, that if the HR managers or the organizations are serious in performing this role, वहां पर आपका ग्रोथ पाथ बहुत अच्छा हो जाता है, आपका डेवलपमेंट पाथ बहुत अच्छा हो जाता है. यू एक्चुअली ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट पर्सनली. ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो कर रही है, प्रोफेशनली भी आप ग्रो कर रहे हैं, एंड यू एक्चुअली लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. It's not just a matter of doing your job on a day-to-day basis. It's about how much you can learn out of that job. How much you can really ensure कि आप लीडर बन गए हो उसमें और आप अपने अंडर और लीडर्स पैदा कर रहे हो. So this is how the competency mapping exercise is being done. सुषमा, अभी तक भेजा नहीं आपने अपना, या भेज दिया? अच्छा, okay, I got it. Sure. So then you will send me whenever you can do it tomorrow, and then you'll be able to do that. Right? So any questions now on this topic? Or have you understood it clearly? Guys, any questions? I'm asking again. No, ma'am. Okay. So now, according to me, the entire syllabus is over.
right? So now what we'll do is, in case you have some question answers or you want me to repeat some topics, let me know. I'm just going through and taking you through the topics जो हमारे course में syllabus में sir ने दिए हैं. You let me know what all you have understood and what you have not understood, because we still have time. कल परसों में तो we can do that. So पहला है topic manpower planning and implementation. Right? We have done that. You want me to repeat certain things in this? Ma'am, can I suggest one thing? Sure, please. Ma'am, we have a 6-month course, right? So we have already completed like approximately in 3 or 3.5 months. So can we do a quick revision of whole course in case I have also missed some of the classes and other people will also go get an overview, so that ma'am, after the assessment, we can at least be able to get a practical knowledge, because 6 months, even 6 months is too less for like getting an overview of HR course. Absolutely. We can do this, ma'am. Yeah, we can do that. Not an issue. We can, whatever topics I have to cover, I will take you through again. So manpower planning and implementation is what I do. Performance management system, learning and development intervention, and managing diversity and inclusion, strategic HRM. Ma'am, I have Yeah. also one idea. Ma'am, if you select the topic manpower and planning, first we will do self-study on it. And if we face any doubts, so we will discuss tomorrow also on this Yeah, topic. please. Exactly my point. I wanted to actually do this. क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं ये और presentations भी हमने share कर दी हैं group में. So what Yes, you हम can पहले do is self-study कर just लेते go हैं. through the presentation and just read about it generally, right? Sushma has got a very good PDF book in case you want to take from her. उसमें काफी कुछ basics हैं, clear हो जाता है HRM के बारे में, theoretically at least. फिर then I'll tell you in classrooms class sessions कि किस तरीके से practically आप manpower planning कर सकते हो दोबारा. Right? We'll do some exercise quickly formulas के साथ, so that you understand कि किस तरीके से workforce, because strategic HRM का बहुत बड़ा function है manpower planning and workforce planning. किस तरीके से, सपोज अगर कल आपको CHRO बनना है किसी बड़ी कंपनी का, लीडरशिप पोजीशन है CHRO की, अब आपको कंपनी का आपसे CEO ये पूछता है कि यू टेल मी हाउ मेनी मोर पीपल आई विल बी रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगले साल हमें 20% और ग्रोथ करनी है अपने बिजनेस में. तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट क्या है, 20% ग्रोथ कैसे आएगी, 20% ग्रोथ अगर हम आज के रिवेन्यूज पे देख रहे हैं किस तरीके से आएगी, तो इतने मिनिमम लोग मुझे कैसे कैलकुलेट करने हैं कि मुझे चाहिए ही, राइट? सो वो फॉर्मूलाज एक बार आप समझ जाएंगे, सो देन यू विल बी एबल टू डू दैट. उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं फॉर्मूला में, कीपिंग इन माइंड कि उस टाइम की गवर्नमेंट रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, मिनिमम वेजेस क्या है, या कंपनी के फंड्स की पोजीशन क्या है, वो सबको देखते हुए. बट जनरली ओवरऑल मोटा मोटा आप लोग समझ जाओगे कि किस तरीके से मैन पावर प्लानिंग करनी है, राइट? अब मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ दैट टिल टुडे इन 18+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन HR, बहुत कम HR मैनेजर्स या सीनियर HR मैं जिनसे मिली हूँ जो लोग वर्कफोर्स प्लानिंग कर सकते हैं. दे डोंट नो एट ऑल. सिर्फ नंबर्स ऊपर ऊपर से पढ़ना जानते हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड इन डीप. गिने चुने लोग हैं इंडिया के अंदर जो सीनियर HR में हैं जिनका नाम लिया जा सकता है कि उनको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आती है, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. ये एक बार सीख लिया ना तो फिर बाकी सारी चीजें HR में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. बाकी सब इतना ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड नहीं रहता, राइट? सो टुमारो you all come prepared with manpower planning and implementation. I will repeat it quickly. Maybe in a case study format we can repeat it or we can discuss. Right? Suman, Sushma, Anjan? Yes, ma'am. Yes. Perfect. So चलो फिर कल मिलते हैं 6:15 बजे. Join the class on time so that we can complete one topic every week. ये competency वाला मैं भेज रही हूँ अभी. Thank you so much for attending. Bye bye. Bye, ma'am.